आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी फरहान, आपको मेरी आवाज? जी सर, आ रही है सर। We start today's session. In this session, we are starting the AC analysis for bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor AC analysis हम complete कर चुके हैं। अब हमें जो है वो AC analysis की तरफ जाना है और इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस सेशन में या इस ये जो टॉपिक्स में हमारे पास जो है डिफरेंट मॉडल्स जो है उनको भी हम रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके, सबसे पहले हम सर्किट रिव्यू करना चाहेंगे। इस सर्किट में हमारे पास जो है वो दो सोर्सेज हैं। एक सोर्स जो है वो हमारे पास प्राइमरी एसी सोर्स है और एक सोर्स जो है वो हमारे पास जो है वो प्राइमरी डीसी सोर्स है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो आउटपुट पे जो वेव फॉर्म आएगी, इनपुट पे तो हमारे पास ये सोर्स है डीसी सोर्स जो है, इसकी वजह से डीसी जब हम एनालिसिस करेंगे तो एक हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज जो है क्लियर होगी। लेकिन जब हम एसी को कंबाइन करेंगे तो ये हमने एप्लीकेशन ऑफ डायोड पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि इसमें फिर वेरिएशन होगी आउटपुट के अंदर। अगर तो फ्रीक्वेंसी बहुत एम्पलीट्यूड है एसी का वो बहुत कम है तो ये नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। लेकिन अगर एसी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो उस सूरत में ये एम्पलीट्यूड जो है ये ऑसिलोस्कोप पे विजिबल हो। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे क्योंकि ये कंसेप्ट तो ऑलरेडी वी आर विद। ओके, पहले इस सर्किट को समझेंगे। ये सर्किट हमारे पास जो मौजूद है ये वोल्टेज डिवाइडर बाइस कॉन्फ़िगरेशन है और फुल एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर के लिए अगर हम डिफरेंट जो गिवन पैरामीटर्स हैं उनको एक दफा देखें। पावर सप्लाई हमें गिवन है और एनालिसिस के लिए हमें R1 गिवन है, R2 गिवन। इसकी मदद से हम जो बेस जो वोल्टेज डेवलप होगी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। base and similarly we have the resistance, the emitter resistance, and similarly the collector resistance. And also one more thing which should be given here is the beta or the gain for this transistor. So there are few more things when we talk about AC. जब हम AC की बात कर रहे हैं, alternate कर रहे हैं, then we should have a AC source, and the AC source and the DC source, we know the difference between them. DC source, there is only single polarity, either positive or negative. In AC source, we have both negative and positive polarity in the signal. Also, there is a resistance which is with the source, but we are not primarily considering at this point in time. We are only highlighting the parameters. The first parameter is given here, which is the input impedance. Remember, जब एक सर्किट में alternate current का concept आ जाता है तो हम जो resistance होती है उसको impedance कहते हैं। अब impedance जो है उसको Z से डिनोट किया गया है, तो ये input impedance है। इसको मैं यहाँ साइड में लिखना चाहूँगा। तो Z input is corresponds to the
Okay, input impedance. So the input impedance, and similarly we have the output impedance. Output impedance. So that out is referred to as the output impedance. And there are two more parameters which are common. One of them is more common, which is called the voltage gain, the output voltage divided by the input voltage. And similarly, there is also one parameter which is called the current gain. Current gain due to the input current input current, and similarly the output current. These currents are, and the voltages are shown also in this circuit. As you can see here, the V1, the V input, the V output, and similarly the input current and the output current. These values are given. So, with respect to the AC analysis, we need to understand that this circuit should have input impedance, output impedance, and similarly the voltage and the current thing. So, whenever this amplifier is used in an application, the characteristics, these characteristics should determine, should fine tune according to the application. Application के मुताबिक इन circuits को fine tune किया जाता है और उसी के मुताबिक जो है वो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यूज और इसी तरीके से कैपेसिटेंस की वैल्यूज जो है वो यूज की जाती है। हमने तकरीबन तमाम चीज़ों की बात की है और ये जो ट्रांजिस्टर है ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर आप देखें तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसकी पहचान ये है कि इसके अंदर एक एमीटर की तरफ जो है वो एक आउटवर्ड एरो लगा हुआ होता है और चूंकि एमीटर जो है वो कॉमन है इनपुट और आउटपुट पे, तो ये एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और वोल्टेज डिवाइडर बाय, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, इससे वोल्टेज divider bias. So this circuit is mostly used in a variety of applications, and that's why this chapter starts with this circuit. And we have in this session already discussed the presence of different components and the quantities which are helpful in performing the AC analysis. Okay, now the next step is to form an AC analysis, AC equivalent circuit. For AC equivalent circuit, because the capacitors has the property to pass through the AC and block the DC, so we have to just combine these rings. So these rings are combined. And similarly, there are two configuration types, one in which the C3 is attached and one without C3. Okay. But because of the AC, we primarily short circuit all the capacitors inside the circuit, and also we ground this or remove this VCC with a ground. So in this case, there are two primary changes when we convert it into a AC equivalent circuit.
When converting into the AC equivalent circuit, we must short circuit capacitors, and we should short circuit the voltage source or battery DC. So these two conditions take us to primarily what is called the AC equivalent circuit. चूंकि किताब में इसकी डायग्राम बनाई है, so we move towards that diagram. इसको understand करना जरूरी है, because this is the foundation of all mathematical models or mathematical equations which are given in this book. We can derive the equations as well, but this is not my focus, and the course will not actually ask you to derive the mathematical equations. Our purpose is, like an engineer, to primarily find the formula and then apply the formula according to the given conditions and generate the result. This is the best approach which we can learn in very short span of time. Otherwise, a full span of the course we need to understand by using primarily the Ohm's law and also the different rules and the laws and the analysis techniques in the basic electrical engineering course, so that we can apply to these networks in which the semiconductor devices are present to solve those circuits. Another important thing is the computer-based analysis. We should be familiar with at least one computer simulator which we can use to primarily verify our solutions. So this is very important. Now we move towards the AC equivalent circuit which is given inside this. So as you can see here in this diagram, they have primarily connected the capacitors and also they grounded the voltage source to make this primarily what is called an AC equivalent circuit. So it is also written in the caption of the figure that the two steps are given, that the removal of the DC supply and short circuit of the सर आवाज बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ये बेटा मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ और चूंकि बाद में इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो अनस्टेबल होती है, तो जी जी रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल होगी। आप रिकॉर्डिंग जरूर देखिए, बल्कि इसका चैनल जो है वो आपके पास अगर लिंक नहीं है तो मुबशर से ले लें। मुबशर के पास सारी डिटेल्स हैं, आप उससे और वो वीडियोस देखें और उसकी मदद से आप इस लेवल, क्योंकि ये अब हम लास्ट टॉपिक्स पे आ गए हैं। ये चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम न्यूमेरिकल्स करने हैं और न्यूमेरिकल्स जी जो है वो फिर हम क्योंकि ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम रिपीट करेंगे टॉपिक्स को। ठीक हो गया सर। ये चीज समझ सकते हैं कि ये सर्किट जो है ये कैसे बना है और क्या ऐसी दो चेंजेस जो प्राइमरीली की गई है जिनकी मदद से ये सर्किट बना है। अभी सर्किट को रीड्रा करना होगा ताकि हम इसको एनालाइज कर सकें। रीड्रा करने के लिए हम जानते हैं कि ग्राउंड को हम आमतौर पे नीचे प्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट वी डू हियर इज वी जस्ट टेक दिस पार्ट टू हियर and draw here, so that because it is a ground usually represented on the lower part, and similarly we do the same over here. Okay, so we just this part and just इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लें और इस तरीके से। अब ये सर्किट जो है अब हम इसको इस तरीके से एनालाइज करेंगे।
तो ये हमारा जो स्टेप होगा ये नेक्स्ट डायग्राम में मौजूद है। अब हम नेक्स्ट डायग्राम को देखेंगे और उसके बाद फिर हम उन फार्मूलाज को देखेंगे एग्जाम्पल में यूज करके, जो हमने कहा था कि हम इनपुट इम्पीडेंस मालूम करेंगे एसी के लिए। ऑब्वियसली इसके लिए हमें डीसी एनालिसिस भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से आउटपुट इम्पीडेंस जानेंगे, फिर जो है वो वोल्टेज गेन जानेंगे। ये प्राइमरीली तीन क्वांटिटीज हैं जो आमतौर पे हम इंटरेस्टेड होते हैं। ऑल्दो the current gain, which is also a fourth quantity, is also appeared in the tables and in different equations, in different examples. So अगर आपको कहीं पे दुश्वारी लगे, कहीं में रिपीट आप चाहे करना, आप जस्ट ये बताइए तो फिर हम उसको okay. By doing this, the analogy or the for understanding, we see an amplifier or a circuit in which transistor is present as a system, and this system can be represented like a black box, यानी जिसके अंदर कोई चीज मौजूद ना हो, and we only know few things like the electrical quantities like the input voltage, current, and the impedance input side, and similarly for the output. We can then primarily by using these things we can go inside the circuit and just draw the resistances, and this primarily then become what is called an impedance matching problem or solution. Way of understanding any system which is composed of electronic components. इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल कोर्स होता है, तमाम कोर्सेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बायोमेडिकल है, इन सब में पढ़ाया जाता है। उसमें ये थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट वो निकाला जाता है। तो दैट इज प्राइमरली द बेसिस ऑफ सच काइंड ऑफ अ सिस्टम। इसकी डिटेल में हम नहीं जाना चाहेंगे बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू डू सम न्यूमेरिकल्स इन आवर सेशन, और उसके लिए अब हम जो है वो फार्मूलाज की तरफ चलेंगे। लेकिन फार्मूला से पहले हम जो अभी हमने एक सर्किट थोड़ा बना के थोड़ा डिस्कस किया था उसको एक नजर डालना चाहेंगे कि अब वो किस फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। रिमेंबर, दो रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल हो गई थी, उनको एक ही रेजिस्टेंस से शो कर सकते हैं, इसमें हमने उनको उनका जो पैरेलल जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर दिया है। and we know that the formula of parallel resistance, how we can calculate it. It's very easy अगर आपको याद हो, तो दो रेजिस्टेंसेस हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इसका फार्मूला है वो कुछ यूं है 1/R1 प्लस 1/R, जिसको R1 multiplied with R2 divided by R1 plus R2 भी लिख सकते हैं। So this is very easy thing in which we just apply the formula for the resistances which are in parallel, and we have written the simple one resistance over here. So this is the AC equivalent circuit. Now this is the time in which we can replace this transistor AC equivalent circuit for the transistor. So because the AC resistance, sorry, AC equivalent circuit of transistor is available, so we just need to go to that part and just take that system and just write here, इसको just replace कर देना। अगर हम गौर से देखें इनपुट साइड जो है उसको हम सिंपली एक जो है वो सिंपल डायोड से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप
The input side can be replaced with a diode, a simple diode, and we know that diode is primarily a resistive channel जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ के आए थे. So we can primarily replace it with a resistance, a variable resistance, which is depending upon the input current. So we can replace it with a small resistance in the network. So this is the input side. If we go to the output side, then we have a relationship that we are already familiar with, that any current, because current is a controlling factor here, IB, the base current, और ये हम पढ़ के आए हैं, so the base current लिखने में इसको प्रॉब्लम हो गई, IB है ये, IB, base current. So here we have beta IB, beta IB, which is actually IC current. हो रही है, but we try to write the mathematical equation for IC, जो हम AC analysis में करके आए हैं. IC. So IC is a beta IB. So we can primarily assume or can understand this is primarily a current source, and this is a dependent current source with this direction में ये जा रहा है. Okay, so this completes what is called the AC equivalent circuit of this transistor. इसको मैं रिपीट करता हूँ. देखिए ये ट्रांजिस्टर जो है इसको हमने इसके एक AC इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्लेस कर लिया. जब हम इसको AC इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्लेस करेंगे तो इनपुट साइड जो है इसकी, ये वाली जो इनपुट साइड है इसकी, इसको हम एक डायोड से या एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं. और चूंकि आउटपुट साइड जो है इसकी ये प्राइमरीली इस इनपुट करंट से कंट्रोल हो रही है, जो कि फार्मूले से नजर आ रहा है, द आईसी करंट is equal to beta IB. So we can primarily use a current source which is a dependent current source, and it is dependent on the base current. यानी beta IB लिखेंगे इसके साथ. Now we can replace this circuit by using these two components, and also because whenever we have a current source, we assume that in the parallel to the current source there is a resistance which is very high. ये हमने जो है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा था कि जब भी हम एक वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो वोल्टेज सोर्स हैज ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन सीरीज, जो कि उसके साथ पैरेलल सीरीज में लगी होती है. लेकिन जब हम एक करंट सोर्स की बात करते हैं then we assume that there is a resistance which is in parallel to the current source. ये चीजें हमें वहां से थोड़ा रिफ्रेश करनी पड़ेगी. What is a voltage source and voltage source resistance? What is a current source and current source resistance? Now we see what is the model, and when we replace this transistor in this circuit, how this circuit look like? ये कैसे बनेगा? तो फिर हम हमारा ये सेशन कंप्लीट होगा, फिर हम नेक्स्ट सेशन के लिए छोटा सा ब्रेक लेंगे. So I am skipping few pages. कुछ पेजेस मुझे छोड़ने पड़ेंगे तो ताकि मैं उस पेज पे पहुंच जाऊं जहां ये मॉडल बनाया गया है. मॉडल की कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी, ये आपको इस डायग्राम में नजर भी आ रही है. ये डायग्राम मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी है कि किस तरीके से हम इनपुट साइड को एक डायोड से और आउटपुट साइड को एक करंट
सोर्स है जो कि डिपेंडेंट करंट सोर्स है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक ट्रांजिस्टर मॉडल है, ये एक्चुअल ट्रांजिस्टर मॉडल नहीं है। इसको बनाने के लिए अभी हमें जो मालूम है, जो चीज हम जानते हैं उसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। So this is equivalent to this one. ये डायग्राम्स बहुत अच्छी और बड़ा सादा अल्फाज में बनी हुई है। अगर आप इनको समझ लेंगे तो things will become very easy for you. Okay, so this is the BJT equivalent circuit, लेकिन क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का भी होना जरूरी है that go to the final version of this. This is the final version, and this is the transistor equivalent primarily model, and this model we have to primarily use inside. As you can see here, that the diode is primarily modeled with a resistance, and this resistance is also depending upon the gain, beta into RE. RE is the resistance of this primary resistance. This resistance beta RE. And similarly, there is a resistance which is parallel to this current source, and we know that the value of this resistance is a high value resistance, whereas this RE's value is a small resistance. Even we multiplied with beta, so the resistance. This is the equivalent model which we need to replace in the circuit जो अभी हम इससे पहले देख रहे थे, और इसमें जो ट्रांजिस्टर है उसकी जगह पे हमने ये मॉडल जो है ये यूज करना। तो लेट्स सी जब हम इसको उस सर्किट में रखेंगे देन हाउ द डायग्राम विल टेक प्लेस। सो योर ऑब्जेक्टिव शुड बी कि आपको ये मॉडल दिया हुआ हो, ये डायग्राम दी हुई हो, और आप उस एम्पलीफायर से ये फाइनल डायग्राम जो है ये बना पाएंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बट वी आर इंटरेस्टेड इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। जो इससे पहले हम सर्किट पढ़ रहे थे वो भी अभी आएगा थोड़ी देर में, but we start from here and then we make the AC equivalent circuit by using the similar methodology. इसमें हमने जो वोल्टेज सोर्स है वो हटा दिया है, कैपेसिटर्स को आपस में मिला दिया है कैपेसिटर के टर्मिनल्स। Then we mainly replace the transistor inside the circuit to get what is called the RE model. The RE model or the transistor equivalent AC circuit is introduced instead of transistor. अगर आप देखें तो इसमें आपको RB भी नजर आ रहा है, RC भी नजर आ रहा है, और ये ट्रांजिस्टर की जगह पे ये जो उसका इक्विवेलेंट मॉडल है, ये ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट मॉडल, ये उसकी जगह पे जो अभी हम थोड़ी देर पहले। Okay, now the formulas will emerge from this new circuit. ये जो सर्किट बना है इसके अंदर से फार्मूलाज जो है वो निकलेंगे, और you will be surprised कि जो फार्मूलाज जो है वो जो हम पहले पढ़ के आए हैं उनके साथ बहुत हद तक क्लोजली मैच कर रहे होंगे। Okay, from this figure, the three important parameters are derived. The first important parameter is the input impedance, which is calculated through this formula. RB is parallel with the beta RE. और हम ये जानेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि RE कैसे मालूम करते हैं। This is very simple formula to calculate the RE, which is we first chapter is equal to 26 millivolt.
divided by IE. And sometimes we write primarily IC here. Okay, so this is the formula which we already primarily जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने ये फार्मूला पढ़ा. So this formula will now we apply here to find the internal resistance of the diode, जो कि base और emitter junction को replace करेगा. And similarly, we can have a approximate input impedance if this condition matches. Okay. If RB is greater than 10 times beta RE, maybe in some cases, so we can approximate that it is just equivalent to beta RE, and there is no effect of RB. Ignoring the effect of RB. And similarly, we can find the Z out, which is just primarily the output resistances parallel, and we calculate them. And the final formula of the voltage gain is given as the output voltage divided by the input voltage. So we calculate the output voltage and the input voltage from the circuit, and it is primarily the RC parallel with R out divided by the RC. If we know these formulas are given, then we can primarily just apply the formula and find the result. अब जो है हम एक ब्रेक लेंगे इस सेशन में, और उसके बाद जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, so we apply we then review the formulas for different configurations, and then we try to solve few examples. ओके बेटा, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए. जी फैसल, आपका कोई सवाल है? जी फैसल, आपका कोई सवाल है? Okay, if there is no question, we can start after 10 minutes. 10 मिनट के बाद जो है वो दूसरा सेशन जो है उसको